And awareness can only come if you are well educated. And I find that there is one trust which is named as Kalgidhar Trust. They are doing wonderful work in the sector of education by bringing such awareness about humanitarian values which is related to Sikh history and Sikhism. उस हर नुक्कड़ गली मोहल्ले ते छोटे छोटे पिंडां दे विच जाके भी यंगस्टर्स नू जवानां नू ये चीज़ सिखा रहे हैं ते बेस्ट क्लास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. नॉट जस्ट अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ बट अबाउट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन वर्ल्ड. दे हैड कम अप विद द न्यू इनिशिएटिव विच इज़ नेम्ड एज वॉक टू सेव. ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी देर इज़ अ रिलेशन टू आर पास्ट, बिकॉज गुरु साहब गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी दे विच बहुत यात्रावां कीतियां विच इज़ ऑल्सो नोन एज उदासीज. ते इट इज़ बीइंग एस्टिमेटेड दैट दे हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड गुड अबाउट 28,000 kilometers. So in today's scenario where we are locked down at our respective places and there is a restriction to move out freedom, it is taking toll on our health. The physical activities is reducing a lot, and not having the physical activity is leading to ill health further. In today's scenario where we are unaware that from where, how and in which form the enemy will impact on us, enemy which is virus which is unknown to us, ਜਿਹਦਾ कि कोई इलाज नहीं है, ਜਿਹਦੀ कोई दवाई नहीं है, ਉਹਦਾ सिर्फ ਇੱਕੋ तरीका है अपने आप ਨੂੰ सेव ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ है to build your immunity. And immunity can only be built if you have good thoughts and if you are using your body physically. By doing any type of physical activity, by doing breathing activity. So this beautiful initiative of Walk to Save by Kalgidhar Trust is one of the initiatives in the same direction, where connecting with the past of Sikhism, we collectively from 1st of August till the end of August will complete or cover the distance of 28,000 kilometers. It is collective because what will you walk, me and anybody who is related to you will take part in this initiative. The total distance covered should be 28,000 kilometers in the period of 1 month. So whatever steps you will take, each step matters, not just for the initiative, not just for saving the world, but for yourself. Because if you build your immunity, then you become strong. जे मैं अपनी ज़िंदगी दे विच फट्टड़ होने तो बावजूद 100% डिसेबल होने तो बावजूद ते शरीर का कोई यह जिहा अंग नहीं है जिथे कोई इंजरी नहीं है, और डॉक्टरां दे और बाकियां दे सहारे रहन तो बाद ये रियलाइज़ किया कि there is only one way to take control of my body, and that is by putting it into rigorous physical activity. Today I am a marathon runner despite not having leg and various injuries. That will add on more positivity to this initiative. So my humble request to each one of you, with my experience I can vouch that you will feel good if you be part of it. But let's collectively cover the distance of 28,000 kilometers in the month of August, and by taking each step, remember your Almighty, remember and pray gratitude to be what you are today. Count your blessings and stay happy, stay healthy. श्री गुरु नानक देव जी ने अपने उदासियां विच शांति ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਕ ਟੂ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ। ਸੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬੜੂ ਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ।